Mumbai, a city of 15 million people, home to the Indian stock market, heart of the glamour industry. Mumbai is India's city of dreams, a city always on the move. But along the Mumbai coastline, the song of the sea finds a voice. Amidst the city's original inhabitants, the Koli fisher folk. The sea is their provider, but will the tides turn in their favour? As a new fishing season dawns on India's commercial capital, Mumbai. या कोली रक्तामध्ये दर्याचं एक असं तुफान आमच्या अंगामध्ये संचारते आणि आमच्या हातून एक चांगली काव्य रचना होऊन जाते आणि गाणे लिहितो. Kashiram Chinsai and his band are Mumbai's best-known Koli musicians, having released over 18 albums of their unique brand of music. Chinsai songs are about the Koli way of life, a 700-year-old legacy. When Mumbai was a sprinkling of 7 fishing islands, the Koli fisher folk made it their home. The development of the modern city eventually pushed their settlements to narrow strips of land along the coast. From here, the Kolis continue a traditional livelihood amidst a sea of change. After 3 months of rain, the monsoon ends, the start of a new fishing season. In Versova, the biggest Koli settlement in Mumbai, preparations are underway to ring in the festival of Narari Purnima. ऐसा माना जाता है कि जब तक अपन नारियल पूर्णिमा के दिन दरिया सागर को अगर अपन नारियल श्रीफल के रूप में समझो अपन अर्पण नहीं करते तब तक समुद्र शांत नहीं होता है. Ramesh Beheli prays for the safe passage of his 2 trawlers. He knows the dangers of a turbulent sea. In 1989, a storm wrecked 72 boats in Versova. Beheli lost his only trawler. Today, the Koli communities of Versova put behind past tragedies and celebrate their solidarity. In the gathering dusk, the Koli fishing community worships the goddess of the sea, bearing the traditional offering of coconuts. The Kolis bow to the power of the sea, creator, preserver, and destroyer of their lives and livelihood. In this house in Versova, a mother prays for the well-being of her son. He has been defying the forces of nature and fishing through the turbulent monsoon. उस टाइम में मच्छी ज़्यादा मिलता है बारिश में. या तूफान आवा रहता है ना, एकदम तेज आवा रहता है और बारिश गिरता है ना, इसलिए जो ज़्यादा मच्छी मिलता है बारिश में. Harish Sandhi is one of the few men in Versova who can throw this 9-kilo net single-handedly. He knows that his best chances of catching fish are in the monsoon months when the fish breed. Other villagers will not venture out into the rough waters, but Sandhi braves the rain to fish in the shallow creeks. Yet during the dry months, he rarely has
any catch. उस टाइम मावड़ा बहुत मिलता था उस टाइम 4-4-5 टोकरी मिलता था उस टाइम इतना ही टाइम में। अभी क्या हो गया अभी का मावा मच्छी कम मिलता है क्या अभी पूरा केमिकल आता है ना कंपनी का वो पूरा केमिकल आता है कंपनी का तो क्या छोटा सा जीव रहता है वो मर जाता है उसमें मच्छी पैदा नहीं होता है ज़्यादा। Industrial wastes have poisoned Versova's creeks. There are no fish. Zanti has found a new source of income. He does bit roles in the Mumbai film industry. मेरा रोल सबसे ज़्यादा अभी हो गया कलिंगर का रिश्ते में वो सबको खुश हो गया देख के पब्लिक वही कलिंगर का शॉट मेरा। The rest of the Koli communities have had to find their own solutions to Versova's dying creeks. Trawlers made an appearance in Versova in the 70s. These mechanized boats venture further offshore to plough the depths of the sea and bring home the harvest. Ramesh Beheli's trawler Masan Devi has just returned from a week-long fishing trip. Even as the catch is unloaded, he stocks up on fuel and ice for the next trip. पहले ऐसा होता था कि मच्छी ज़्यादा मिलती थी इसके बारे में हम लोग लोन बिन का फिक्र नहीं करते थे लेकिन अभी के टाइम में डीजल के दाम बढ़ने से अभी जितना हम लोग खर्चा करते हैं उतना निकलेगा या नहीं निकलेगा इस सोच में हम लोग परेशान रहते हैं। Rising fuel costs and the unpredictable catch means that each fishing trip is a bit of a lottery. But some seem to have struck lucky. In the dead of the night, Beheli leaves the familiar shores of Versova into a sea of uncertainty. As the first net is cast, Beheli's hopes run high. 2-4 बोट को लॉट भी लगेला है भगवान करे अपने को भी एक लॉट लग जाए। There is excitement as the crew spots an eel that could fetch a handsome price. ये सब हाई क्वालिटी का ही झींगा है ये लेकिन थोड़ा कम है। A lot of the catch is not valuable and is thrown to the gulls. But even as Beheli's nets stretch the ocean floor, he has added to the woes of another Koli fisherman. 20 kilometers to the north of Mumbai are the fishing villages of Vasai. The Kolis here are predominantly Christian. They practice a traditional form of fishing called the dole. धंदा आहे ना ह्यो आम्ही म्हणजे आता तुम्ही बघितला असेल ह्यो टिकाव धंदा आहे कोल्लरचे धंद्यामुळे ते एकदम जमिनीला त्यांचा झाला असते ना ते जमिनीला एकदम चाटून येतो म्हणजे त्यामुळे तो बारीक बारीक संपूर्ण त्यामध्ये तो जीवजंत असतो मासळीचा तो सगळा संपूर्ण त्यामध्ये सगळा खलास होऊन जातो। Dole fishing is hard work. A funnel-shaped net is attached to poles erected in the path of the deep-sea currents that carry fish. The currents change every few hours and the nets must be hauled before this happens, or else they will topple, losing the catch. But the skill and hard work does not seem to be paying off. Meanwhile, Beheli's crew seems to be luckier. It was not long ago that dole fishing was popular in Versova too. But as the catch shrunk, they adopted the more aggressive trawler. Trawling day in and day out, every 3 to 4 hours. After 7 days at sea, Beheli's trawler returns home. Despite all the hard work, he's disappointed. तो हमारा भी 30-32 हज़ार का कॉस्ट हो जाएगा लेकिन हमारे अगर हम लोग 5-6 नाइट के लिए भेजते हैं
तो 35-40 हज़ार रुपये हम लोग को जो खर्चा होता है। एक्चुअली ट्रिप हमारा लॉस चल रहा है। भगवान पे भरोसा रख के हम लोग अभी धंधा चलाता है, और ऐसा ही फिर लॉस चला गया तो हम लोग को बहुत बंद करना पड़ेगा। And yet, Barely is lucky. 2 days after Masan Devi returned from this trip, the tsunami tidal wave struck Southeast Asia. In India, the hardest hit were fishermen across the southern coast. Even as there is talk of an earthquake warning system, tougher coastal regulation laws, and mangrove afforestation programs, steps that will benefit the fishermen in the long run, there is the realization that it took a tragedy to address some of their long-standing concerns. But there is one Koli in Versova determined to raise issues faced by the fishing community before it is too late. Rajhans Tepke hails from a family of fishermen, but he works as a clerk in a government bank. In 2003, Tepke launched a monthly newspaper to highlight issues faced by the Koli community. समाज को जागरूक करने वाला कोई वर्तमान पत्र होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए, जिससे अपने भाई लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लिए क्या कर रहा है और हम क्या करना चाहिए, इसमें जागृति निर्माण हो, इसलिए सागर शक्ति चला है. Today, an article in a national daily has caught Tepke's attention. It reports a moth attack on the mangroves of North Mumbai that has led to widespread browning. In Versova too, the trees seem withered. Tepke is concerned. The mangroves are the roots of the sea, an important breeding ground for fish. The decomposing mangrove leaves provide nutrition to fish larvae, while their vertical roots keep animals and bigger fish at bay. A safe nursery, it is estimated that as many as 70% of the fish found in the deep sea breed in these offshore nurseries. Tepke decides to meet the young activists quoted in the article to find out more. इतने पहला में इतना ब्राउन हो गया है, ये मॉथ्स है क्या? क्या सचमुच इतना प्रॉब्लम है क्या ये? अभी ये जो मॉथ होते हैं, जब ये जो कैटरपिलर स्टेज के बाद ककून होके जब ये बाहर आते हैं, हाँ, तो इनका बड़े पैमाने में आते हैं और एकदम स्वार्मिंग सा हो जाता है उनका. हाँ. तो अभी अगर कोई बाइकर जाता रहेगा रास्ते पे, हाँ. तो उसका तो हेडलाइट्स तो चालू ही होगा, तो हेडलाइट्स के लाइट की वजह से मौत अट्रैक्ट हो जाते हैं. अच्छा. और जब ये गाड़ी जब चलाता है कोई बाइकर विदाउट हेलमेट या कुछ, तो फिर मौत ऐसा भी होता है कि स्वाम में उसके आंखों के सामने आ जाते हैं. प्रॉब्लम होता है, आँख में जा सकता है. Tepke learns that moth swarms have caused road accidents. The damage to the mangroves, though visible, is not as ये serious. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे ये मौत ककून बना के, अरे बाप रे. और देखो, और बहुत मिलेंगे आपको इधर. ये वापस ग्रीन हो जाएगा क्या? हो जाएगा अभी, और 1 महीना लगेगा, बाद में आपको वापस ग्रीन दिखाई देगा. Tepke learns that the mangroves are already in a regenerative stage. Heartening news at a time that mangroves face a more serious and permanent threat of destruction. हमें पता है कि मैंग्रोव्स जो खाड़ी किनारे हैं, ये सब कोली लोगों के मच्छी मारने के जगह है, मगर वहाँ पे सब आम तौर पे बिल्डर लॉबी और गवर्नमेंट पूरा मैंग्रोव्स का जो फॉरेस्ट है वो नष्ट करती जा रही है, लैंड डेवलप कर रही हैं और वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं. यानी कि बॉम्बे के डेवलपमेंट के नाम से कोलीवाड़ा और कोली समाज का विस्थापन हो रहा है, और ये विस्थापन लोगों के सामने आना चाहिए. Tepke is not alone in his mission. Environmental action groups across Mumbai have also done their bit to save the mangroves from the clutches of builders and other vested interests. They know the mangroves are a precious buffer between land and sea, the only protection against storms and tidal waves.
These photographs were instrumental in getting a stay order from the Supreme Court on a golf course that would have destroyed 550 acres of mangroves. But these conservation efforts are small compared to the acres and acres of mangroves already destroyed along the Mumbai coastline. In this dismal scenario, 1,750 acres of protected mangroves is a beacon of hope. The Vikhroli Mangrove Project, managed by one of India's biggest corporate houses, Godrej, is an ISO-certified environment managed system. Tapke's last stop is to meet the project head of this conservation effort, Vivek Kulkarni. मुंबई में देखा जाएगा तो अब मैंग्रोव्स कट के रिक्लेम होते हैं। रिक्लेमेशन होने के बाद वहाँ पे झोपड़पट्टी बनती है, झोपड़पट्टी के बाद ही वहाँ पे बिल्डिंग आ जाती है। इसी प्रकार सब जगह मैंग्रोव चले जाते हैं। पहले में एक झोपड़ी होती है, उसी की फिर झोपड़ी की लाइन बन जाती है। तो ऐसा ये जो आपका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसमें आपको डर नहीं महसूस हुआ झोपड़पट्टी बढ़ने का? डर तो है था। एक दिन एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी ने भी बताया कि यहाँ पे से कुछ ट्रांसमिशन लाइन जाती है कि वहाँ के अंदर उसके नीचे का ज़मीन सरकार का रहता है, तो आओ झोपड़ियाँ बसाए। एक रात में 160 झोपड़ियाँ वहाँ पे आ गई थी और हम लोगों ने नेक्स्ट डे जाके उनको वहाँ से निकालना पड़ा। दिक्कतें आई, काफ़ी लाइफ थ्रेट्स भी मिले। In the face of all odds, the mangroves in the Godrej Reserve flourish, sustaining a unique wetland ecosystem. A rewarding sight is the symphony of flamingos who migrate from Siberia to these wetlands during winter. The Koli fisher folk in this area continue to fish in the creeks. हमारे कोई कोली और आगरी लोग हैं जो यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और क्रैब्स एक्सेट्रा पकड़ते हैं। अभी उनको इसका महत्व मालूम पड़ा है। तो आज यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कंपनी के पहले ही ये लोग आके मेरे को हेल्प करते हैं, मेरे को बताते हैं कि यहाँ पे कटाई का कोई कोशिश कर रहा है। तो अभी ये काइंड ऑफ अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो गया है। Meanwhile, in Versova, the catch is offloaded from the trawlers, and the evening fish market becomes a hive of activity as the women of the community swing into action. हाच बिझनेस पसंत केला कारण हे खूप चांगलं आहे. A great profession, declares Harsha Tapke, the banker's wife, and she certainly knows the art of making a sale. कॅडबरी बघ ना, ऑइल नको टाकायला, एकदम फर्स्ट क्लास पीस आहे. After all, fish selling is a proud tradition among Koli women. Familiar figures amidst the bustle of Mumbai, it is these women who hold the purse strings of the community. Sassoon Dock, built in 1875, is the oldest wharf built on the west coast of India. Most Koli women are here at the break of dawn to buy fresh fish at bargain prices at the fish auctions along the wharf. With their precious cargo in tow, the women head into the city's markets, often packed like sardines. One Korean has given the truck to Sassoon Docks a miss. Today she can start out later than usual. मोकळाचा वेळ कधीच नाही मिळणार. तिकडशी जलाशी 4 वाजता जातो. 4 वाजता तिकडे सगळी मच्छी 7 वाजेपर्यंत घेतो. 7 वाजेपर्यंत घेतलं का मग लाडी 8 वाजेपर्यंत बसतो तिकडे. बाजारात 9 वाजता येतो. Business is slack, and Vandana Bailey, wife of Ramesh Bailey, is concentrating her energy in getting her fish for the best price in the local fish market. भावामध्ये झगडायला लागते. मग 300 रुपयाची कशाला 250 रुपयाची दे का 200 रुपये दे असं झगडायला लागते आम्हाला.
This is the very spot that Vandana's mother sold fish and her grandmother before her. But business is simply not what it used to be. पहिला जास्त गिरेक व्हायचं मग ती आठ मच्छी ती भैये लोक फेरीवर जातात नाही बिल्डिंगीवर त्यात कमी व्हायला लागलं. Migrants from North India have flooded the fish trade. They take to the street and sell fish door to door, a convenience few can resist in Mumbai's fast-paced work culture. But discerning customers still prefer to buy from the fish market. Fish is better here in the bazaar because you get all the variety. More reliable to come here than rather than buying from those guys because mostly we don't know from where they buy it or it may be not so very fresh. Despite the loyalty of regular customers, at the end of the month, Vandana feels the pinch when she has to make both ends meet. नवरा कुठे नाही गेला तर मी एकटीला बघायला लागते सगळं इस्कॉलचं खाण्यापिण्याचं सगळं एकलीला बघायला लागते. फी वगैरे द्यायला लागते शालीची बिलीची ती एकटीला करायला लागते. जर धंदा झाला का मग द्यायला लागते नाही झालं का मग 2 दिवस पोक 4 दिवस पोक असं सांगायला लागते. माना चल के कभी था मद्रासी माना चल के था पंजाबी माना चल के कभी था गुजराती माना चल के था बंगाली चाहे कोई भी हो तेरी भाषा चाहे कोई भी हो बोली नस नस में दौड़े हैं जो तेरे पहचान हवा है कहाँ की है पानी कहाँ का है मिट्टी कहाँ की तो बोल दिल के तलों से ये जय 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 जय. Even Versova is caught up in election fever as coolies flock to the polling booths. Raj Hans Dapke conducts a spot poll for his newspaper. किती वर्ष झाली मतदान करतेस? गेल्या 30 वर्ष. वय तुझं वय केवढं झालं तुला? वय 80 वर्ष झाली अजूनपर्यंत मतदान करते. मध्ये खराब पाणी झालेलं आहे त्यासाठी मासे भेटत नाही. तर आता जे महाराष्ट्रात जे सिच्युएशन आहे त्यामध्ये कोणत्या पक्षांनी कोली उमेदवार दिलेत का? एकाही पक्षाला या कोळी समाजाची जाणीव झालेली नाही. कुठल्याही पक्षाने आमच्या समाजाला प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. अच्छा. आज ह्याच वेळेस नाही तर गेल्या 55 वर्षात एकदा सुद्धा कोळी समाजाचा विचार करण्यात आलेला नाही. आज त्यांना तिकीट का दिली नाही ह्याविषयी आमच्यामध्ये नेहमी प्रश्न उठत असतात की त्यांना तिकीट का दिली नाही. जे मावरं देणार आहे ते तुम्ही देवाकडे मागणी करता. मावरं ते ह्या राजकीय लोकांकडे तुम्ही मागणी नाही करत. मावरं आम्हाला आमचा धंदा चांगला राहील आपल्याला. The coolies believe their issues will be addressed when they can have their own elected representatives. Until then, like this holy man, they can only pray. But some 50 years ago, coolies played a crucial part in the birth of the Indian nation. 40 के अंदर जवाहरलाल नेहरू आया था. बहुत बड़ी मीटिंग हो गई थी. हम लोग पार्ले से उसको चल के लेके आया. हे करून सत्याग्रह करून पोलीस किती लोक पुष्कळ त्यांमध्ये आम्हाला पकडून नेलं सामान. सामान ठाण्याला ठेवलं. एक दिवस ठाण्याला ठेवलं. दूसरे दिवस ईसापूरला. 2 तारीख महात्मा जी का जन्म वो दिन में हमने सत्याग्रह किया. मैं जेल में गया नहीं है. मैं सब अंडरग्राउंड काम करता था. मैं खुद बम बनाता था. After 2 centuries of British rule, India was caught in the throes of the freedom struggle. The 1942 Quit India movement gathered momentum in Mumbai and the coolies of Versova joined the cause. There are over 100 freedom fighters from Versova's Koli community. Dapke speaks to one of them.
विस्फोटक रहता है ना पदार्थ, वो भी मेरे पास था इधर। और ये एसिड का बड़ा बॉटल था। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हो गया, ये सब रिवॉल्वर, ये एसिड बिसिड हम बंदर पल्ली के गाड़ दिया एक जगह, तो मिला नहीं किधर वो। लेकिन वो इधर जो डिपो था लकड़े का, मिलिट्री का, मड आइलैंड में, ये 4 डिपो का आग लगाया हम टाइमिंग बम रख के। Bharchandra Bhandari narrowly escaped being caught thanks to the intervention of the then Deputy Inspector General of Police, Rani. रानी बेचारा मेरे साथ एक यहाँ से रोड तलक आया, ऐसा मेरे कांधे पर हाथ दिया। वो बोलता है भंडारी ऐसा मत कर, इसको फांसी का सजा है, अभी तुम जाएंगे ना इधर, ये बाजू मत जाओ, इधर तुम सर्विस करता है, इधर जाने का नहीं, ये लोग तुमको तुझे को लेके जाएंगे इधर और मारने वाला है मिलिट्री वाला, तो जाना नहीं इधर, सर्विस करने का नहीं, जाना मत। तो उस दिन से मैं गया ही नहीं सर्विस को, तो रानी ने मेरे को बचाया। But Bhandari is indignant that the sacrifices of the past have not guaranteed a political future. अभी सिकेला पड़ेला, हमारे यहाँ डॉक्टर है, वकील है, हमारे जमात में अभी डॉक्टर है, वकील है, सब है, लोग पढ़े ले आए, ग्रेजुएट लोग आए, राजाओं जैसे इतने होशियार तड़पदार जवान लोग हैं हमारे पास अभी हमारे समाज के अंदर। क्यों नहीं जगह, क्यों नहीं दिया कांग्रेस टिकट हमारे लोग को, काय की वजह से नहीं देता है? Unanswered questions that wash up on Versova's shores. The fight continues, the daily struggle to ensure their livelihood, a better future. आम्ही कोली दर्याचे राजे हाव, आम्ही कोली दर्याचे राजे हाव, न पराचा